Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you in today's session. And today we are going to talk about evidence-based management and leadership. This article is written by Rob B. Briner and Neil D. Walsh. And we are covering this article under the coursework of Leadership, Emotional Intelligence, and Decision Making. When I was preparing this article, Albert Einstein's statement was echoing in my mind that no problem can be solved from the same level of thinking that created it. Basically, होता ये है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है, हमें उस प्रॉब्लम से निकल कर उस प्रॉब्लम के हल के बारे में वो सोचना पड़ता है. वो किसी शायर ने क्या खूबसूरत कहा था कि अगर कोई शक्ल निकलेगी तो इसी मुश्किल से निकलेगी. So we have to be more holistic. We have to be like thinking like systems approach and systems thinking. We have to use the systems intelligence in our decision making, in creativity and in innovation. And we have to be able to keep separate the people from the problem. So there are many aspects जिससे कि हम एक problem के solution की तरफ वो जा सकते हैं. और आज का जो हमारा कंसर्न और टॉपिक है, ऑब्वियसली इट इज बेस्ड अपॉन द एविडेंस. सो वी नीड टू सी कि उस प्रॉब्लम के बारे में हमारे पास हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स क्या क्या मौजूद हैं, हमारे पास क्या क्या एविडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, और फिर उसके सोल्यूशन के लिए भी हम किन एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव द फ्लेवर ऑफ द नॉलेज पर्सपेक्टिव, जिसका कि मेन स्लोगन आप सब जानते होंगे कि वी शुड नॉट बी देयर टू री इन्वेंट द व्हील. तो वी शुड बी एबल टू कम अप विद न्यू एक्सपेरिमेंट्स, वी शुड बी एबल टू कम अप विद न्यू एविडेंस, वी शुड बी एबल टू कम अप विद न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, जिससे कि मोर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस हम हासिल कर सकें. When we talk about evidence-based management or evidence-based practices, so basically इसका जो ताल्लुक है इस सारी discussion का, it is circling around these three main variables. That is conscientious, explicit, and judicious perspectives. The way we are going to define the whole evidence-based practice is, the definition is that evidence-based management is about making decisions through the conscientious, explicit, and judicious use of four sources of information. And as you can see, the four sources on the slide, there can be practitioners, practice, and judgment. The second source is evidence from the local context. The third source is a critical evaluation of the best available research evidence. And the fourth source is the perspectives of those people who might be affected by the decision. So इन चार बेसिक एस्पेक्ट्स को हमें मद्देनजर रखना है, और इन तीन जो मेन वेरिएबल्स हैं, जो मेन कंस्ट्रक्ट्स हैं, कॉन्शियसनेस, एक्सप्लिसिट एंड जुडिशियस पर्सपेक्टिव्स में अपने डिसीजन मेकिंग को वो डेवलप करना है. When we talk about conscientiousness, so it actually means the practitioners and the managers who make planned, thoughtful, and sustained efforts. When we use the expression explicit, it refers to being open and clear about what evidence has been found and communicating and recording it in a comprehensible way, so that लोग दोबारा से पहिए को इजाद ना करें. They should not be there to reinvent the wheel. And number two, कि सबके पास available हो records, एविडेंसेस के माजी में किस किस तरीके से क्या क्या फैसला वो किया जाता रहा, ताकि हम फ्यूचर की डायरेक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से उस्तवार कर सकें. And when we talk about judicious, so having, showing or done with good judgment or sense. तो इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी to bring in consideration the issues, the problems, the evidences for decision making, creativity, and obviously the innovation. अब जब हम elements of evidence-based management की बात करेंगे, तो हमारा decision mostly would be relying upon four aspects. It can be evaluated external evidence, जिसमें के हमारे पास केस स्टडीज हैं, डेटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स एंड तरीके मौजूद हैं. When we talk about stakeholders, preferences and values, so innovative problems जो उनको फेस करनी पड़ी.
प्रपोज सॉल्यूशंस जो उनकी तरफ से हमें रिसीव हो रहे हैं, उन सब का हम सहारा ले सकते हैं। जब हम प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर्सन का जो बैकग्राउंड नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एजुकेशन है, ये तमाम चीज़ें मैटर करेंगी कि कहाँ कहाँ पर उसने काम किया, कहाँ से उसके पास किन डिसीजंस के एविडेंस मौजूद हैं, कौन से प्रॉब्लम्स को उन्होंने हल किया, किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी वो काम किया हुआ है। सो उसका जो एक इनर टैसिट एक्सपीरियंस और नॉलेज है, उस सब को हम यूज कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट, लोकल एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम वाबस्ता हैं, जहां पर फैसला करना है, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उसके डेमोग्राफिक्स वो सब क्या है, उसकी लोकल एनवायरनमेंट कैसी है, उसका एनवायरमेंटल कल्चर कैसा है, उसका कल्चरल एनवायरनमेंट वो कैसा है, मैनेजमेंट टीम में कौन लोग शामिल हैं, उन तमाम लोगों की क्या एक्सपर्टीज हैं, क्या कंपिटेंसीज हैं, क्या प्रोफिशिएंसीज हैं। तो ये तमाम चीजें हमें बेस प्रोवाइड करेंगी to collect the right evidence and to find out the optimal solutions for our decision making. So evidence-based decision is basically asking about 6 steps. The first would be to ask and inquire about the issue and the problem, then acquiring the rightful data, then appraising and upgrading and finding out the data collected, उसको वो अप्रेज करेंगे सो दैट कि हम उसको एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में लेके आ सकें जिस यूजेबल फॉर्म से हमें इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग अपनी करनी है। देन वी हैव टू एग्रीगेट द होल नॉलेज, सपोजिटली डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फेजेस में डाटा कलेक्शन हो रही है, डिफरेंट लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू एग्रीगेट ऑल द डाटा विच वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड, then we have to analyze it, then we have to apply it, and then we have to assess कि अब इस सारे डाटा की रोशनी में हमारे पास जो एविडेंस जनरेट हो रहा है उसको हम किस तरीके से ज़्यादा एप्लीकेबल वो बना सकते हैं। For example, supposedly I have picked few examples from the human resource management perspective कि आपको inquire करना है about the selection techniques, आपको discuss करना है about performance management, आपको investigate करना है about the job satisfaction. So you have to see कि हमारे पास किन किन हवालों से इन तमाम चीज़ों के perspectives में evidences वो मौजूद हैं। सो उन तमाम एविडेंसेस को, उन तमाम प्रैक्टिसेस को हम बेस बनाएंगे अपने कंटेम्पररी और अपने करंट इश्यूज को हल वो करने के लिए। The second aspect upon which the author is talking about is doing evidence-based management in organizations, and he is talking about theory versus practice phenomena. जब हम थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि इन विच सेक्टर और इंडस्ट्री वी आर एक्चुअली डीलिंग विद, उस सेक्टर और इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, उस सेक्टर और इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कितना है, उस सेक्टर और इंडस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, उस सेक्टर और इंडस्ट्री के अंदर मेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं, उसके स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स क्या हैं। सो वी आर सपोजिटली गोइंग टू कवर द डिटेल्स ऑफ द सेक्टर एंड इंडस्ट्री एस्पेक्ट्स। उसके बाद किस वॉल्यूम के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां पर ऑपरेट कर रही हैं। देन वी आल्सो नीड टू नो कि उस इलाके का सारा जो महल्ले वकू है वो कैसा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है जहां से वो ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट कर रही है, वो इंडस्ट्री ओरिजिनेट कर रही है, उस कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो ये हमारे पास 3 मेजर एरियाज हैं जिनको कि हम बेस बनाएंगे व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी वहाँ के कल्चरल डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करेंगे और ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैसे हैं, वहाँ पर स्टोरीज एंड मिथ्स क्या प्रिवेल कर रहे हैं, वहाँ पर हीरो एंड हीरोइंस वो कौन है, वहाँ पर पैराडिम क्या डेवलप कर रहा है, वहाँ पर पैराडिम शिफ्ट जो है वो किन किन हवालों से अकर हुआ, वहाँ पर लोगों की सोच, उनके एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर सोशियोलॉजिकल कंसर्न्स वो क्या हैं। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स में हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अपनी इन्वेस्टिगेशंस वो लॉन्च करेंगे टू फाइंड आउट द राइट एविडेंस प्रिवेलिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑब्वियसली जब हम कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो उस कल्चरल पर्सपेक्टिव में बहुत से मॉडल्स भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात कर रहे हैं तो अटेंशन टू डिटेल, पीपल ओरिएंटेशन, आउटकम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस, इस तरह के बहुत से वेरिएबल हमारे पास आ सकते हैं। जब हम नेशनल कल्चर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उस सूरत में वी नीड टू टॉक अबाउट कि वहाँ पर कलेक्टिविज्म कितना है, इंडिविजुअलिज्म कितना है, पावर डिस्टेंस की सिचुएशन क्या है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कितनी की जा रही है, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के एस्पेक्ट्स को हमें देखना पड़ेगा। सो एक
एक होलिस्टिक पिक्चर, एक बड़े लेवल के ऊपर हम चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करेंगे, विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, ताकि हम फैसला कर पाएं कि इन द डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स, किस किस्म के इश्यूज वो इवॉल्व कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, इन हाउस भी, आउटसाइड भी, और उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास बेहतरीन एविडेंस और बेहतरीन सॉल्यूशंस वो क्या हो सकते हैं। जब हम एविडेंस बेस्ड ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो उनकी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, वहां पर सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन वो किया जाना चाहिए, वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशंस और प्रैक्टिसेस उनको बड़ा विजिलेंटली देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए इंटरवेंशंस को डिजाइन किया है। एंड ऑब्वियसली जब हम इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस इंटरवेंशन है, हमारे पास टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में इंटरवेंशन हैं। तो हमें अपने तमाम इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव्स को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम राइट इंटरवेंशंस के साथ अपनी डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट को लेकर आ सकते हैं। इसी तरह यू हैव टू कम अप विद आइडियाज व्हिच आर देयर टू रिपोर्ट ऑफ फेलियर्स। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ फेलियर्स, कि कहां पर हमें माजी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहां कहां पर हम नाकाम हुए, ताकि हम दोबारा से उन एवेन्यूज को ना एक्सप्लोर करें जहां पर हमें प्रॉब्लम हुई, so that we should not be reinventing the wheel, we should not be exhausting our resources on unnecessary investigations. लाइकवाइज जब हम नए एवेन्यूज पर जा रहे हैं, नई राहों का तयन कर रहे हैं, हम रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, तो वी शुड बी एबल टू टॉलरेट द एरर्स। सो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स जिसमें कि द पीपल लर्न फ्रॉम देयर एरर्स। ठीक है, तो आप एरर्स को प्रॉब्लम समझने की बजाय उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं, और ऑब्वियसली लर्निंग अपॉर्चुनिटी एरर्स तभी बनेंगे व्हेन यू हैव द प्रॉपर पेशेंस एंड प्रॉपर टॉलरेंस लेवल टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड दोज एरर्स। लेकिन ज्यादा इसमें बेहतर फिनोमेना ये होगा, बेहतर पर्सपेक्टिव ये होगा कि एरर्स इज नॉट प्रॉब्लम, लेकिन एरर्स को रिपीट ना होने दिया जाए। ओके, जैसे हम जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जुडोका का, राइट, कि प्रॉब्लम एट द सोर्स आप आइडेंटिफाई करो और उस प्रॉब्लम को एट द सोर्स ही खत्म करने की वो कोशिश करो। दैट डज नॉट मीन कि प्रॉब्लम्स वुड नॉट टेक प्लेस, दैट ओनली मीन्स कि आप प्रॉब्लम्स को एट द सोर्स आइडेंटिफाई करके उन प्रॉब्लम्स को वहीं पर खत्म करो, ताकि वो प्रॉब्लम्स रीअकर ना करें, सिस्टम में आगे ट्रेवल वो ना करें। इसके अलावा there are certain other characteristics your author in this article is talking about related to the evidence-based oriented organizations, and those characteristics are that there should be transparent decision making. Everybody should be knowing the pros and cons, the ups and downs, the parameters prevalent to decide for that particular thing. उन तमाम चीजों के बारे में सब लोगों को इदराक होना वो जरूरी है. So there should be transparent decision making. Then there must be encouragement for experimentation. ठीक है, हर किसी को आप वेलकम करें कि जो शख्स अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन के साथ आगे आना चाहता है, सो दे आर वेलकम टू एक्सपेरिमेंट, दे आर वेलकम टू यूज साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, दे आर वेलकम टू एक्सप्लोर न्यू एस्पेक्ट्स। Likewise, there should be the environment of healthy skepticism. There should be development of critical thinking, and obviously जब सब लोग इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होंगे, everybody would be coming up with their participation, so evidence-based management approach should be rewarded. Because obviously when you talk about change and do not change reward and recognition system, remember nothing would change. So change को incorporate करने के लिए obviously हमें change को overcome करना आना चाहिए, हमें change की resistance को overcome करना आना चाहिए। So उस केस में हमें reward करना चाहिए उन लोगों को who are contributing towards the development of that particular organization. Then your author is talking about leadership, differences between leadership and management. So when we talk about these aspects, leadership and management, first of all, these are interchangeable terms. इसमें कोई second राय नहीं है कि most of the time जब हम organizations में leadership की बात करते हैं तो we are actually referring to those managers who are having the leadership capability. लेकिन अगर हम इस के expressions में एक difference create भी करें तो the management concern is more related with pragmatism, जिसके बरक्स leadership concern is more related with the aspirational, right? Aspirational जो aspects हैं उसके साथ leadership का ताल्लुक वो ज्यादा है as compared to just the goal achievement and goal attainment.
लाइकवाइज अगर हम फर्दर इसमें एक डिफरेंस क्रिएट करें तो मैनेजमेंट इज मोर फोकस्ड अपॉन एक्शन ओरिएंटेशन, जबकि लीडरशिप इज मोर फोकस्ड अपॉन इंटरैक्शनल एस्पेक्ट। ठीक है, मैनेजमेंट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्शन, जबकि इंटरैक्शन जिसमें के लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जिसमें के लीडर फॉलोअर का रिलेशनशिप, जिसमें के ट्रस्ट, जिसमें के मोटिवेशन, जिसमें के इंकरेजमेंट, जिसमें के इंस्पायरेशन, जिसमें के एस्पायरेशन, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वेरिएबल्स जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दैट इज मोर लाइक लीडरशिप एज कंपेयर टू जस्ट मैनेजमेंट थिंग। So we would not be wrong in our conclusion that leaders can manage, and obviously leaders are there to manage, but managers may not lead. ओके तो ये हमारी एक टिपिकल हाइपोथेटिकल assumption है कि लीडर्स, और हम तमाम उन मैनेजर्स को तस्वुर कर रहे हैं who are there to manage the phenomena, manage the people, manage the circumstances in more interactional aspirational aspect, लेकिन हर मैनेजर शायद उस लीडरशिप कैपेबिलिटी के साथ वहां पर मौजूद ना हो। अगर हम फर्दर लीडरशिप एंड मैनेजरियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो लीडर के साथ जो एसोसिएटेड हमारे पास ट्रेड्स हैं, दैट द लीडर्स आर मोर लाइक क्रिज्मेटिक, दे आर मोर ट्रांसफॉर्मेशनल, दे आर मोर लाइक विजनरी, जबकि मैनेजमेंट कंसर्न्स जो मोस्टली होते हैं दे आर देयर टू ओनली मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, they are there to maintain the structural perspectives, and they are there to maintain the operational capability. ओके तो यहां पर अब हम जब ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इट इज मोर लाइक आउटकम ओरिएंटेड फिनोमेनास। ठीक है, जिसके बरक्स जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो दैट लुक्स लाइक मोर रिलेटेड टू पीपल ओरिएंटेशन। ओके तो अब दोनों एक्सट्रीम्स लाइक ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर सिर्फ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव होगा, लीडरशिप नहीं होगा, कहीं पर सिर्फ लीडरशिप होगा, मैनेजरियल पर्सपेक्टिव नहीं होगा। एज आई टोल्ड यू कि दीज आर like interrelated interchangeable expressions, लेकिन इनकी implication साइड के ऊपर obviously कुछ हमें differences, कुछ इसकी जो डेप्थ में implications हैं वो different तरीके से नजर आती हैं। Then your article written by Rob B. Briner is talking about how do leaders use evidence. अब हम अगर लीडरशिप पर्सपेक्टिव को हाईलाइट कर रहे हैं तो वी हैव टू सी कि एविडेंस को लीडर्स एक्चुअली यूज वो कैसे करेंगे। Before I proceed with this discussion, let me just show you a small clip by Rob B. Briner, and he would be there to tell you कि किस तरीके से वो evidence को in relation with the leadership and in relation with the management वो elaborate करता है। So just hold for a second, and I'm just turning on the details from Rob B. Briner. So in a way, evidence-based management is very simple, and it just means making a better informed decision. So in the context of management, that means using different kinds of evidence from different sources, both to first identify a particular problem or opportunity, and once that's identified, then to try and identify the most likely solution. So management, for us, the main sources are firstly the manager's own professional expertise, what they've learnt in their career, what expertise they have. The second source of evidence is stakeholders, which would include obviously employees, maybe shareholders, maybe the wider community. The third source of evidence is scientific evidence. So scientific research that's relevant both to the problem and potential solution. And the fourth source, of course, is organisational data itself. So essentially it's about trying to gather evidence from those four sources, combine it together to better understand the problem, and once that is understood, then think about the most effective solution. Yeah, I mean, I think when we look at managers or HR managers and look at the decisions, it's quite easy to go, well, that was a really strange decision. Why did you do that? Because there wasn't much evidence, you didn't think about it very much, you went for the first option you thought about. But actually, I think for all practitioners, whether you're a manager or a police officer or a politician or a doctor or an academic or a scientist, I think it's a similar problem in that I think we know in principle that we need to use more evidence in decision making, but the problem is lots and lots of things get in the way of us doing that. So I think in a sense we naturally are interested in getting evidence and information, but various things get in the way. And that in the context of management includes things like management fads and fashions. So there's some new idea in HR, and such as something like employee engagement or talent management, everyone gets very excited and go, we must do that. And then you think, well, actually, do you have a problem with engagement? Why are you measuring it? Is engagement important for you? And if you don't know those things, then there's probably no point in following these
fads and fashions. I think that's one thing that gets in the way. Another thing, which I hear a lot from managers and HR people, is that they often feel that what they do is not evaluated. So whether what they do works or doesn't work or has no particular effect, they never get to find out. So again, the incentive isn't there for them to use evidence. So I guess I'm quite optimistic about it. I think people do want to use evidence, but understanding these barriers is a very important starting point to try and get closer to making better informed decisions. Yeah, I think for an HR practitioner who wants to become more evidence-based, there's some quite simple things. And I think first, it's very difficult to do it on your own. So if you are a single HR manager surrounded by a team who are not interested in this, it's very tricky. So the first thing is get lucky and make sure you've got a team who are interested in evidence-based practice. The second thing is quite simply to ask the question why a lot. Why are we doing this? Why do we think it's a problem? On what basis? I think the third thing is to look at some of the resources on the Centre for Evidence-Based Management website. Look at the Centre for Evidence-Based Management website for things like tools, techniques, ways of thinking and approaching sort of problems in an evidence-based way. So I think there's some fairly simple, straightforward things people can start doing straight away, but it is by no means difficult. And if, for example, people start asking why a lot, some people quite enjoy and find that questioning useful. Other people say, you know, that's enough, let's just get on and do something. So there's always those sorts of tensions, but I think there are things people can do to try and make better informed decisions. All right, we were just listening to what Rob B. Briner wanted to share with us. Let's move back to our discussion of the slides. We have just listened to Rob B. Briner that a couple of times there are issues related with the HR people and the management people that they question the use of this evidence-based thing. So let's see that how do leaders use evidence, and that is our context under discussion right now. For example, when we talk about the leadership concerns, first of all, like this statement, which I'm highlighting again and again, that don't try to reinvent the wheel. That is the most important phenomena upon which the leaders must be focusing upon. And when we talk about evidence-based leadership, so the first thing we need to focus upon is intuition and effective reasoning. That is something which the leader must be having, and that is something which the leader must be sharing with the followers, with the colleagues, with the people he's responsible for. Second important phenomena when we talk about the evidence-based leadership is the phenomena of social pressures, because the leader is many a times going to face many questions that what, when, how, and why. And those social pressures are sometimes the challenging avenues, the challenging aspects for the leadership perspective. Then sometimes some leaders might go for limited use of evidence because they might not be convinced enough that we have to collect the evidence or not. And other times they are more relying on the personal experiences rather than trying to find out that what is the actual situation going on, what are the norms prevalent in the industry. The people are there to talk about their own personal experiences because those are the things जो कि एक पर्सन के माइंड में ज्यादा एक्टिव मेमोरी के तौर पर वो अवेलेबल हैं. So they are more relying on their personal experiences. And obviously, so we can conclude in a way that the leaders need to have more conscientiousness. They are supposedly more explicit in their expressions, and they have to be more judicious when they are trying to come up with rightful decisions, creativity, and innovation. So what roles could leaders play in evidence-based management? As the next topic is continued in the article by Rob B. Briner. And there are 3 ways to encourage adoption of evidence-based management. The first expression is being an advocate for evidence. The second main important thing is being a collector and provider of evidence. And the third most important thing is providing the time and resources required for the effective use of एविडेंस. तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास जिससे कि एडॉप्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट को हम इनकॉर्पोरेट वो कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस देम इन बिट मोर डिटेल. जब हम एज एन एडवोकेट ऑफ एविडेंस की बात करेंगे तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज वी हैव टू डेवलप इंटरैक्शनिस्ट स्टाइल. Okay, it should not be just like a one-man show. It would not be just like fixing blames. There should be interaction, there should be interdependence, and the leadership role would be more concerned with communicating in more transparent manner.
The leadership role would be more concerned with driven by rationality and facts. Leadership role would be more concerned with accessible to all concerned. And obviously, leadership role is more concerned with motivation, encouragement, enthusiasm of the people, so that the people are able to find out the reason and logic in their existence. The people are able to find out their purpose of being. The people are there to find out the objectivity in that subjective environment. The second important thing, as we discussed, is being a collector and provider of evidence. That's the leader's role. And when you are acting as a collector and provider of evidence, remember one thing, that you have to be aware of the evidence. You should be knowing कि historically क्या कुछ available है, क्या कुछ हो चुका है, और कहाँ पर कब हमने क्या फैसला वो किया, और क्या क्या शवाहिद आपके पास मौजूद हैं, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हैं. Then you have to engage yourself in data collection and analysis, which is very important, because sometimes to collect a particular evidence, तो आपको कई तरह की रिसर्च जो है वो करनी पड़ती है, आपको एविडेंस ढूंढने पड़ते हैं, आपको कई तरह के रॉ डाटा में से एनालिसिस के बाद अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है. एंड ऑब्वियसली इस सारे अमल के दौरान यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ जनरेशन है उस पर कंप्रोमाइज ना हो रहा हो. So in a nutshell, if I provide the conclusion of this particular discussion, तो हमें knowledge management की तरफ वो जाना पड़ेगा. लीडर को as a knowledge person अपने आप को demonstrate करना है, so that that person is recognized as evidence-based person. The third aspect is providing the time and resources required, because to collect the data, to analyze it, to use different perspectives to find out the facts and figures, तो उसमें time भी लगेगा आपका, and the other resources are also required. So leader's role would be that he or she is there for the critical appraisal, he or she is there for the systematic development of the procedures and processes and practices, he or she should be there to maintain efficiency and effectiveness of the whole mechanism, and he or she should be there to identify the areas of action and development. वो कौन से deficiency points हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या gaps हैं, उन सब को find out करना, उन सब को rectify करना, उन सब के solutions को ढूंढना, optimum utilization of resources की तरफ जाना, ये तमाम responsibilities हैं जो एक लीडर के हिस्से में वो आती हैं. इसी तरह जब हम roles of leaders की बात करेंगे in terms of evidence-based management, तो there are certain benefits like given by the author, and the benefits would be that the leader would be better able to come up with proper strategic planning. उसके लिए मॉनिटरिंग आसान होगी, उसके लिए एक्शन रिसर्च लॉन्च करना इजी होगा, और उसके लिए एवेल्युएशन एंड रिव्यू करना कंफर्टेबल होगा, टू फाइंड आउट the avenues, to find out the methods, to find out the ways जिससे कि हम creativity, innovation and appropriate decision making की तरफ वो जा सके. Then your author is starting another discussion which is related to that how can leaders become more evidence based. अब उनको ज़्यादा evidence based बनाने के लिए हमें इस बात की यकीन दहानी करनी है कि knowing is the first phenomena before seeing. As it is said in a famous quote that eyes cannot see what the mind does not know. So knowing is important, क्योंकि जब तक आपको किसी फिनोमेना की डिटेल पता नहीं होगी, जब तक आप उस चेंज को सेंस नहीं कर सकेंगे, जब तक आप उस डेवलपमेंट की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, तब तक आपको वहां पर उस चीज की जरूरत भी नजर नहीं आएगी और आप उसके एविडेंस को भी ढूंढ नहीं पाएंगे. So therefore, knowing is the first step, that you are able to understand, you are able to perceive that what you are there for. इसी सिलसिले में जब हम ट्रांजिशन टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं कि यू आर डेवलपिंग द बिहेवियर, द राइट बिहेवियर टू कम अप विद द एविडेंस बेस्ड डिस्कशन, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्किल्स वो होनी चाहिए. अब उसमें सिर्फ टेक्निकल, कंसेप्चुअल, ह्यूमन, एंटरप्रेन्योरल या डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव्स नहीं है. You should be able to pick up the tone of the market. You should be able to pick up the context of the industry. You should be able to come up with holistic system developments. You should be able to understand economic, socio-political, techno-structural perspectives. तो आपको multitasking और multi-skill वाला बंदा वो होना पड़ेगा. Then you have to develop your behavior if there are certain deficiencies which are restricting your decision making and restricting your capability to collect the evidence, तो आपको उन behaviors को, उन नए methodologies को, उन नए concerns को वो सीखना भी है. So you should always be on the learning end.
ओके इसी तरह एक्सटेंसिव नॉलेज बेस आपकी होनी चाहिए, एक्सपोजर टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑक्यूपेशनल स्फीयर्स होने चाहिए, बिकॉज जितना मल्टी डायमेंशनल मल्टी पर्सपेक्टिव आप होकर सोचोगे उतना आपके लिए आसान होगा नोवेल प्रॉब्लम्स को टैकल करना। अब इसी एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव में आपको विलिंगनेस लेकर आनी है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर भी, ताकि द पीपल शुड नॉट बी चेंज रेजिस्टेंट, और उस कल्चर के अंदर भी एक एविडेंस मौजूद हो, उस कल्चर के अंदर भी एक पर्सपेक्टिव मौजूद हो कि जिसमें लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनने को फोकियत दें, the place where the people are ready to become knowledge workers as compared to just skilled workers. ओके इसी तरह इंकरेज ओपन डिस्कशन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव में जब लोग सोचेंगे, मल्टीपल एंगल से जब चीजों को विजुअलाइज किया जाएगा, आपस में नॉलेज शेयरिंग होगी, तो नॉलेज शेयरिंग वुड बिकम द सोर्स ऑफ पावर। ओके सो द रियल पावर, द रियल नॉलेज वुड डेवलप जब सब लोग अपने अपने टैसेट को एक्सप्लिसिटली इजहार राय में वो लेकर आएंगे। जब आप इंटरनलाइजेशन से एक्सटर्नलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जाओगे इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज। लाइकवाइज ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस होनी चाहिए, जैसे एक टर्म बड़ी मशहूर हम पढ़ते हैं ओपन बुक मैनेजमेंट, बिल्कुल उसी तरह ओपन बुक मैनेजमेंट की तरह, जहां पर सिर्फ आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज नहीं करनी है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को, पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस को, हर एस्पेक्ट को लोगों से शेयर करना है, सो दैट द पीपल शुड बी क्लियर इन देयर थॉट प्रोसेसेस कि दैट व्हाई दे आर देयर एंड व्हाट दे हैव टू अचीव इन फैक्ट। Likewise, training on the use and benefits of evidence-based management के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, so that people could find out reasons and logics in their action planning. इसी adoption and implementation phases में we should be there to visualize the commitment of organization for development, because unless and until particularly जब तक top management की involvement नहीं होगी, उस वक्त तक हम किसी भी चीज को strategic terms में implement नहीं कर सकते हैं। So the commitment of the whole organization is important, and specifically focusing upon the top management perspective, that they should be there readily to come up with the new ideas, the new ways of doing things, and they should be able to allocate the right resources for collection of the evidences. Commitment of leader, not only just the top management, but the leader, whoever is that person is, and in whatever role that person is operating, उन सबको भी हमें लेकर आना है। And the top management perspective के केस में भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो the CEO, CFO, COO, these are the people who should be acting like the true leaders, because unless and until वो visionary नहीं होंगे, वो transformational नहीं होंगे, वो change oriented नहीं होंगे, वो flexible adaptive नहीं होंगे, तो फिर down the hierarchy मुश्किलात का सामना वो करना पड़ेगा। इसी तरह क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, लाइक योर मिशन, लाइक योर विजन, इन सब को शेयर्ड होना, इन सब को क्लियर होना, इन सब के अंदर एंथुसियाज्म का पाया जाना, क्लैरिटी का होना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बिकॉज जब तक आपको आपकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगी, तो जाहिर है कि आप डेवलप कैसे करोगे, आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेटिंग कैसे करोगे, आप अपने लिए माइलस्टोन्स तय कैसे करोगे। सो यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट एंड वेरी मच केयरफुल कि आपको कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या अचीव करना है। एंड ये सब कुछ तब मुमकिन हो पा रहा होगा when you are becoming like a learning organization. And as I always define कि learning organization एक ऐसी organization है where there is organizational learning. तो आपको एक फिजा कायम करनी है, आपको एक कल्चर डेवलप करना है, आपको एक लीडरशिप पर्सपेक्टिव लेकर आना है where people are willing to come up with their creativity and innovation, when they are not resisting to the change, when they are there to adopt modern and upgraded technologies, when they are there to come up with right ways of doing things. The next topic which your author is talking about in the article is related to the costs and benefits of becoming evidence-based. अब जब हम costs की बात करते हैं, तो the costs of evidence are at 3 levels. जब हम organizational level पे cost की बात करेंगे, तो investment of time and resources, ये इसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, और इसमें सिर्फ फिजिकल या टेंजिबल कॉस्ट नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वो मौजूद हैं। जैसा कि द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स टू unlearn first if they need to go for more learning, because unless and until the people are not ready to unlearn, when organizations are not ready to unlearn, it would be difficult for them to come up with more better and modern context. ठीक है, यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए, विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट।